Hello guys, I am Yatanjeet Kaur and I am in a 4th course. Plus also I am a tutor at Inspiring Minds Coaching. So here I am with my new video on placenta previa. So let's start our discussion on placenta previa. So guys, what is placenta previa? It is nothing but it is an abnormal implantation of the placenta over the internal cervical os. Now, there are different types of placenta previa you will see. The first, generally there are 4 types, so I will discuss one by one. The first one is low lying. In this case, what you are going to see is the placenta is within the lower segment of the uterus, but in this case the placenta is not touching the cervical os. Now, and the second one is marginal. In this, the placenta is touching the margin of the internal os, but it is not going inside the cervical os, or you can say very much close to the cervical os. And in the partial one, what you are going to see is the placenta is covering the cervical os partially. And in complete type, what you are going to see is the placenta is covering the os completely. Now to understand all these things, let's come to this figure. As you can see here, this is just I have drawn the normal presentation. To understand the low lying में आप देखते हो ये वाला केस, placenta lower segment में होता है, but it is not touching the internal os, like, or the margin of the internal os. But if we are talking about the marginal one, यहाँ पे क्या होता है कि जो placenta होता है, it is touching the margins of the internal os, cervical internal os. This is os, cervical os. और अगर हम बात करें पार्शियल की, पार्शियल में आप क्या देखोगे, यही जो placenta है, it will just covering the cervical os partially, you can say. It is somewhere like this, as I am showing you here. And if we are talking about the complete one, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो placenta है, it will cover the cervical os like this. Means it will cover the cervical os completely. तो आप देख सकते हो ये सर्विकल ऑस को कम्प्लीटली कवर किया है इन केस ऑफ कंप्लीट टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया. नाउ ये जो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया होता है, ये फर्दर 2 टाइप का होता है. वन इज़ द एंटीरियर वन एंड द सेकेंड वन इज़ द पोस्टीरियर वन. एंड वन मोर पॉइंट हियर, द पोस्टीरियर वन इज़ ऑल्सो नोन एज द डेंजरस टाइप ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया, ऑल्सो कॉल्ड एज dangerous type. Now why it is called as the dangerous type? जनरली क्या होगा, अगर इस केस में प्लेसेंटा जो है पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा. अगर अब ये हमारी पैल्विक कैविटी है, जस्ट इमेजिन, और इन दिस केस द प्लेसेंटा इज कवरिंग द पैल्विक कैविटी पोस्टीरियरली फ्रॉम द सैक्रल, इट इज़ कवरिंग द सैक्रल वे. और अब जब बेबी का हेड जो है इस पैल्विक कैविटी से पास करने की जब कोशिश करेगा, तो इन दिस केस जो बेबी का हेड है, इट विल कंप्रेस द प्लेसेंटा. अब अगर प्लेसेंटा कंप्रेस होगा तो क्या होगा, यू विल सी देयर विल बी डिक्रीज फीटल हार्ट रेट एंड ऑल्सो यू विल सी फीटल डिस्ट्रेस इन दिस केस. सो दैट्स वाई दिस टाइप इज़ वेरी डेंजरस. नाउ what are the risk factor for placenta previa? Now the main risk factor is nothing but the previous history. If the female is already having in the previous pregnancy, she is having the placenta previa, so there are more chances to likely have the placenta previa in the next pregnancy too. The other one is multiparity. अगर एक से ज़्यादा बेबी को उसको डिलीवर करना है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन सी. अगर मैटरनल एज ज़्यादा है तब भी आप देख सकते हो. इफ़ द फीमेल इज़ smoking, also you can see in that case. And if there is a with the like
associated history with the placenta accreta. I will discuss about the placental invasion in my next video. So other risk factor are previous C-section, or you can say if there is any myomectomy, in that case you also see this. Now this is all about the risk factor. Now just come with the how the patient comes to you, what is the clinical presentation, what things you will find on the physical examination. We will discuss one by one. Okay, now the clinical features or clinical presentation. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई फ़ीमेल आती है, वो बोलती है कि डॉक्टर जैसे मैं सुबह उठी मैंने क्या देखा कि मेरे बेड पे पूरे ब्लड था. सो इन दिस केस व्हाट यू आर गोइंग टू सी, इन दिस केस देयर इज़ अ पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग. तभी तो उसको सोते हुए पता नहीं लगा कि देयर इज़ सम ब्लीडिंग और समथिंग एल्स. सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी हियर, देयर इज़ द पेनलेस vaginal bleeding. Now this bleeding, it can be recurrent. This bleeding can be recurrent, can be causeless, or what it is bright red in color. Bright red color. नाउ अगर आप इनका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हो तो आप क्या देखोगे, यू विल सी देयर इज़ अ मैल प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, प्लस जो इनका यूट्राइन साइज होता है दैट इज़ जस्ट एज इन केस ऑफ पीरियड ऑफ एमेनोरिया. और वन साइन यू विल नोटिस हियर, दैट इज़ स्टॉलवर्थी साइन. सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स दैट यू आर गोइंग टू सी हियर? Or physical examination, what things you will see? First is a malpresentation of fetus. The second one is you will see the size of the uterus is equal to the period of amenorrhea. And the third one you will see, that is Stallworthy sign. I will explain you what is this. Now the Stallworthy sign is nothing, it is a decreased fetal heart rate when you try to push the presenting part of the baby into the pelvic cavity. जब भी आप पुश करोगे प्रेजेंटिंग पार्ट को, आप क्या देखोगे कि फीटल हार्ट रेट है जो डिक्रीज हो रही है. So it is decrease of fetal heart rate when you try to push presenting part into pelvis. Other thing you will find is there will be no fetal distress. So these are generally the things that you are going to find on the examination. Now what method you will going to use for this for the investigation? Generally हम इसके लिए transvaginal ultrasound है, that is a golden standard for the diagnosis of the placenta previa. Or you can also go for transabdominal ultrasound, but most of the time you go for the transvaginal one. And one more thing, in placenta previa never ever go for the digital vaginal examination, because when you are going to do the digital vaginal examination maybe आप उसकी कंडीशन को और वर्स कर दोगे, बिकॉज इन दिस केस यू विल स्टिमुलेट द सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस एंड देयर विल बी ह्यूज हेमोरेज एंड दिस विल turn the patient condition into very severe one. So
What is the method of investigation? Investigation is by transvaginal ultrasound. You can also go for transabdominal ultrasound. So this is the investigation method. Now अगर आपको अब how do you manage the condition of the patient? Generally for the management we are having two things. One is the McAfee-Johnson regime, also known as the expectant regimes, and the other one is the active regime. Now the management. First is the McAfee and Johnson's regime. We generally use this regime if the gestational age is less than 37 weeks. अब आप कैसे करोगे? कोई आपके पास पेशेंट आया, यू जस्ट एडमिट दैट पेशेंट एंड उसको बेड रेस्ट पे रखोगे, उसकी फीटल मॉनिटरिंग, मैटरनल मॉनिटरिंग आप करोगे. इफ़ यू सी द कॉन्ट्रैक्शन इज़ देयर देन गिव द टोकोलिटिक्स. टोकोलिटिक्स क्या करते हैं? सर्विकल डायलेशन के प्रोसीजर को स्लो कर देते हैं बाय ब्रेकिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, बट डिक्रीजिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. And the other things you will go, as I told you, the gestational age is less than 37 weeks, so in that case you will go for the steroid because there is no lung maturation, so आपको steroids देने पड़ेंगे बेबी को. And और अगर mother is RH negative, so just give anti-D, and this is what comes under the McAfee-Johnson regime. The other is the active regime. Active regime, in this case what you are going to, in this the gestational age must be more than 37 weeks, and इसमें टाइप 1 और टाइप 2A के लिए, जो कि एंटीरियर पोजीशन थी, इसके लिए यू विल गो फॉर द वजाइनल डिलीवरी. And if there is a type 3 or type 2B, type 4, in this case you will go for LSCS. Now I want to ask you one question. अगर कोई फीमेल आई है आपके पास with the placenta previa, और on the ultrasound you are find that the baby is dead, there is no fetal heart rate, nothing else, so इस condition में you will go for vaginal delivery or the C-section. So just try to answer this. Pause the video and try to answer. So in this case, I know you will think obviously why we have to go for cesarean section. Obviously we will go for vaginal delivery, but it is a wrong answer. In this case we will go for the cesarean section क्योंकि जनरली एज देयर इज़ अ प्लेसेंटा प्रीविया एंड इट इज़ इफ़ इट इज़ अ 4th डिग्री, तो आप देखोगे पहले प्लेसेंटा डिलीवर होगा, तो उससे क्या होगा, जब प्लेसेंटा पहले डिलीवर होगा तो साइनोसॉइड्स जो हैं वो खुल जाएंगे. जब तक बेबी को डिलीवर करेंगे देयर विल बी ह्यूज हेमोरेज एंड इवन दिस हेमोरेज कैन कॉज फीमेल डेथ. सो इन दैट केस always go for cesarean section. So this is about the management of the placenta previa. So guys, thanks for watching my video and please subscribe us on YouTube, follow us on Instagram and join our Telegram group. There I will post all the related MCQ to this topic. Thanks for watching my video.